The next, after sp3 hybridization, what next we have is sp2 hybridization. sp2 hybridization means one s and two p orbitals combined. The scenario will remain the same. Carbon है, carbon का 6 atomic number है, 1s2, 2s2, 2p2. If we go for the block diagram of the last orbital, which is the second orbital, the block diagram is going to be something like this. This is the ground state. एक्साइटेड स्टेट के अंदर ब्लॉक डायग्राम में ये चेंज आता है कि ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करने के बाद लास्ट ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाता है. नहीं, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या आता है? इसमें कॉन्सेप्ट ये आता है कि बिल्कुल एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला गया, लेकिन इसके जो ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, they will going to be involved in hybridization. However, the last orbital will not be involved in hybridization, and it will not it will not participate in hybridization, but orbital does exist. So हम ये कहते हैं कि ये ऑर्बिटल अब कौन सा ऑर्बिटल है? दिस इज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल. जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, those orbitals are involved in sigma overlapping. However, unhybrid orbital will be involved in pi bond. ये बॉन्ड जरूर बनाएगा क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है. जब ये एग्जिस्ट करता है तो ये बॉन्डिंग में भी इन्वॉल्व होता है. बट किस किस्म की बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है? ये पाई बॉन्डिंग के अंदर. बात समझ रहा? But ये 3 orbitals, they will combine together and they form what? They form hybrid orbitals. These hybridized orbitals, 1s, px, and py, they are forming 3 hybridized orbitals, and those hybridized orbitals are sp2, sp2, and sp2. Which is the compound? And we need to remember one thing more, and that one thing more is that it has another orbital which is unhybridized, but it is there. You can't ignore it. It is there. That's right. So where do we see this kind of hybridization? This kind of hybridization can be seen or can be observed in ethene. How? Ethene mein, if you see one carbon over here and one carbon over here. Why ethene? Because ethene के अंदर हमको pi bonding नजर आती है. So एक ऑर्बिटल ये वाला आ गया, मैंने यहाँ ड्रॉ कर दिया एक कार्बन का. दूसरा कार्बन है, इसके पास भी 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं. ये ऑर्बिटल आ गया यहाँ पर. सही है? अगर मैंने 2 कार्बन लिए हैं, इस कार्बन के पास भी 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, इस कार्बन के पास भी 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं. मैं इन दोनों को कंबाइन करके क्या बना रही हूँ? मैं इन दोनों को कंबाइन करके आई एम मेकिंग व्हाट? ईथीन. ताकि मैं किसकी प्रेजेंस शो कर सकूं? मैं इसकी प्रेजेंस शो कर सकूं. किसकी? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. अच्छा, एक ये वाला इसका भी बना लिया, एक ये वाला इसका भी बना लिया. यहाँ पे समझ आ रहा है? अब ये 2 रह गए. ये ऑर्बिटल मैंने एक इसका यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, एक ऑर्बिटल इसका यहाँ ड्रॉ कर दिया. इसी तरह इस कार्बन का भी एक यहाँ ड्रॉ हो गया, इस कार्बन का एक यहाँ पे ड्रॉ. विद दिस क्या आगे अटैच हो जाएगा? हाइड्रोजन. यहाँ पे आगे क्या अटैच हो जाएगा? हाइड्रोजन. यहाँ पे भी आगे क्या अटैच होगा? हाइड्रोजन. यहाँ पे भी हाइड्रोजन ही अटैच हो जाएगा. ये था sp2. sp2 के साथ आगे कौन अटैच हो गया? s. ये क्या था? sp2 आगे अटैच हो गया s. Here it was sp2 and it is s. sp2 and s, and this was sp2. This was also sp2 hybridized orbital.
Till now, यहाँ पे कौन सी overlapping हुई है? Is it sigma or is it pi? Here, yes, it's sigma, sigma, sigma overlapping, sigma overlapping, sigma overlapping. We can't forget one thing, and that is we still have one unhybridized orbital on each carbon. Here we have one unhybridized orbital. And here we have one unhybridized orbital. So these unhybridized orbitals will combine together and they form what? Pi overlap. Get it? Write it in here, draw. Okay, so there is also a question comes that comes in his mind also, that why this PZ is not participating. That can be a question. But in organic chemistry, I would recommend you people that not undergo into whys, because हम चाहे किसकी बात करें, we talk about methane, we talk about ethene, we talk about propene. Are these man-made organic compounds? Are these man-made compounds? No. They are naturally extracted compounds. When it comes to the naturally extracted compounds, generally वहाँ पे observe किया जाता है. वहाँ पे ये question नहीं किया जाता कि why is it happening? Even if people try to give the answers, they cannot give an answer. It's just like you are asking the God that why put two eyes over here. You are observing the behavior, and you observe that this behavior also exists in carbon. And carbon is very different. That is why it has a separate organic chemistry. कि एक ही कार्बन है, उसी कार्बन के अंदर एक ही हमें ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट नजर आ रही है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट के बाद किसी जगह पे 3 ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर हाइब्रिडाइज हो रहे हैं, किसी जगह पे 4 ऑर्बिटल्स कंबाइन होकर हाइब्रिडाइज हो रहे हैं. एंड नेक्स्ट सिनेरियो के अंदर क्या है? Next scenario में when we talk about sp hybridization, how many orbitals are combining? Please be active and do it yourself. What happens in sp hybridization? One s and one p. Come on, do it. जो एग्जाम्पल्स मैंने देखी that are right, and क्या एग्जाम्पल्स थी? The examples are कि आपके पास sp hybridization का मतलब है 1s orbital and only one px will going to be combined, and in return what we are getting? In return we are getting 2p orbitals, 2sp hybridized orbitals. Not only 2sp hybridized orbitals, as well as we will have what? We will have 2 unhybridized orbitals also, or unhybridized orbitals कौन से हैं? py and pz. If we have to discuss about the example, that what is the example of this, then the example would be shape. शेप देके पूछेंगे, बताती हूँ सवाल कैसे है. अब वो एग्जाम्पल अगर पूछते हैं तो एग्जाम्पल है हमारे पास. एग्जाम्पल क्या है? द एग्जाम्पल इज ऑफ इथाइन. इथाइन के अंदर कौन सी बॉन्डिंग होती है? इथाइन के अंदर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है. सो इसका मतलब है अब हर कार्बन के पास, अगर ये इथाइन बनाते हुए एक कार्बन है, उसके पास भी 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, इस कार्बन के पास भी 2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है, और 2 ही इनके पास क्या है? अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स है. हम इनको कंबाइन कैसे करेंगे? इस कार्बन का पहले ये वाला ऑर्बिटल यहाँ पे लाके ड्रॉ कर लिया, इस वाला कार्बन का ये वाला ऑर्बिटल, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे. ठीक है. अब इस कार्बन का ये ऑर्बिटल है, ये आपने यहाँ पे आके ड्रॉ कर लिया. इस कार्बन का ये ऑर्बिटल है, ये आपने कहाँ ड्रॉ कर लिया? ये ड्रॉइड हो गई. जो साइड ऑर्बिटल्स होते हैं इनके साथ कौन आके अटैच हो जाता है? इनके साथ अटैच हो जाता है हाइड्रोजन. यहाँ पे भी सिग्मा ओवरलैपिंग है, सिग्मा ओवरलैपिंग है, एंड सिग्मा ओवरलैपिंग. पाई ओवरलैपिंग कौन करेगा? पाई ओवरलैपिंग करेंगे इनके पी वाई ऑर्बिटल्स एंड इनके पी जेड ऑर्बिटल्स. यहाँ से एक पाई ओवरलैपिंग होगी, यहाँ पे एक पाई ओवरलैपिंग होगी. इसका मतलब है जो इथीन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? 1 2 3 बॉन्ड्स होते हैं, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है. एक पाई ऑर्बिटल ये है, एक पाई ऑर्बिटल ये है. यहाँ सेंटर में क्या होता है? सिग्मा ओवरलैपिंग. क्लियर? मूविंग अहेड नेक्स्ट. Next में what we have? Bond energy. What is this? Bond energy is basically what? It is the energy required to break
1 mole of a particular covalent bond in a gaseous state. Please इसको याद रखा करें. That we are talking about the gaseous state. What is the unit going to be? The unit going to be kilojoule per mole. And this is the most important point that you need to remember. What that most important point is, larger the bond energy means what? Larger or stronger the covalent bond. If you need a lot of amount of energy to break a bond, that means the bond was stronger. Any confusion? Writing. What is bond length? Bond length is the intermolecular distance yeah, it is the intermolecular distance of two covalently bonded atoms. Hmm. Or you can say that is the distance. Sorry, there is no harm in writing again. This can also be taken as the distance between two nucleuses of the two atoms that are required to be bonded covalently. Now, there is a question also, and you will try to answer it, but first think and then answer me. First scenario is, in this first scenario, we say, let's suppose that bond length decreases. If I say, let's suppose bond length decreases, then what will be the impact on the covalent strength of the covalent bond? Will it increase, the bond become more stronger or less stronger? The bond become, okay, I agree. Bond length decreases, bond becomes stronger. Why does it happen? Like, why bond becomes stronger? Sorry? Distance, I understand. Distance कम होगा, bond strong हो जाएगा. My question is, what is the thing that is making it more stronger? Between what? Agreed. Force of attraction becomes stronger between what? Electrons and. Thank you. Yes, that's right. Why the bond is becoming stronger? The bond is becoming stronger because greater the forces of attraction. Please be very specific. Greater the forces of attraction between what? Greater the forces of attraction between nucleus and electron. Okay, so if I ask you to tell me where the bond is stronger between, no, which one will have the shortest length of the bonds? Single, double, or triple? In according to this concept, then that should be the strongest bond. Is that right? Let's write it. They are the shortest. They are the shortest, which means that strongest covalent bonds. And that is because
What else you can say? You can say that increase in force of attraction. Just for the sake of example, ये लिख लें इसकी जो bond length है, the bond length will be what? 147. Energy requirement 347 kilojoule per mole. Yeah. But do not confuse it with the reactivity. When we talk about the reactivity, what do we say? That reactivity of the covalent molecules, ये किस बात पे depend करती है? Does it depend only on the bond length? It depends on what? Because when we talk about reactivity, we have studied very much that reactivity is stronger, or who are the less reactive elements? Single covalent compounds are the less reactive elements. Yes, that's right. Reactivity of the elements or the compounds are greatly influenced by bond polarity, bond strength,